हम तुम ता 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 ना 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 ता ना 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 रे, हम तुम ता 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 ना 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 ता ना 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 रे। Assalamu alaikum and welcome to Sepma 2020, bringing you very powerful and engaging conversations regarding music and the future of music in South Asia, particularly Pakistan. हमें बहुत खुशी है कि शान-ए-पाकिस्तान ने अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए एक दफ़ा फिर Sepma 2020 के लिए we went back to the drawing board and made it all digital and virtual. अब आप जिस भी स्क्रीन पे इसको एंजॉय कर रहे हैं, इससे महजूज हो रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं आपके फेवरेट स्टार्स, द पीपल हु कैरी द बेटन ऑफ पाकिस्तान्स म्यूजिक लेगेसी एंड हेरिटेज फॉरवर्ड। और इसके साथ साथ वो लोग जो मूवर्स एंड शेकर्स एंड डूअर्स हैं हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक कंग्रेचुलेशंस इज ड्यू फॉर दिस ब्यूटिफुल कोलैबोरेशन to all those who played a part in it. इसमें हम यकीनन acknowledge करना चाहेंगे this team that is led by Human Nasser, Shaan-e-Pakistan of course, and the network which as our partner is Jio. Talking Point हमारे साथ है और आप ये particular conversation देख रहे हैं from the very beautiful, the iconic Koel Gallery. For this we are very thankful to Mr. and Mrs. Bilgrami. Conversation को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए उम्मीद की ज़रूरत होती है और ऑफ कोर्स सस्टेनेंस की भी, यानी खाना पीना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। दोनों का आपस में क्या गठजोड़ है और हुकूमत वक्त को कैसे यकीनी बनाना है कि हमें ग़िज़ा भी मिले और रूह की ग़िज़ा भी मिले, ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। एंड आई हैव जस्ट द राइट पीपल टू टॉक अबाउट इट, पीपल हु वर्कड इन मल्टी स्टेक होल्डर एनवायरनमेंट्स, चाहे गवर्नमेंट के साथ हो, गवर्नमेंट में रहकर काम करना हो, मीडिया को रिप्रेजेंट करना हो या फिर आर्टिस्ट को। They've played all the roles, so they understand the nitty-gritties. हमारे साथ मौजूद हैं the ACE Festival designer and curator Omar Omari, who is also now a part of the Sindh government, and of course we have the PR entrepreneur and journalist par excellence Shanaz Ramzey. Assalamu alaikum and thank you guys for being here. वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले उमर, अगर आपसे शुरुआत की जाए, जो हमने कनेक्शन जोड़ा है ग़िज़ा और रूह की ग़िज़ा का, इसमें आपकी क्या इंसाइट है? बिकॉज यू स्टार्टेड आउट द कराची ईद फेस्टिवल when it was unthinkable. लोग सोच नहीं सकते थे कि कराची शहर में एक ऐसा पब्लिक इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन अब तो लोगों को इंतज़ार रहता है। जी, well, you're right. 2014 was when we started the festivals. Was very challenging, obviously because of the security point of view. We've come a long way from there. But immediately, what went hand in hand with the food was the music aspect of the festival, and I think if you imagine the festival without music, all of a sudden it just you can imagine what would happen if you didn't have music at a festival. It's just it adds so much. It complements in so many ways. So music was a very, very natural sort of addition to the I think festival. ambiance create होता है ना. What better way to live your weekend कि आपका बेहतरीन खाना हो, आपके पास इनोवेटिव नई चीज़ें हो और बैकग्राउंड में आपकी फेवरेट सॉन्ग्स भी प्ले हो रहे हैं। लेकिन शहनाज आपा, मैं कभी कभार समझती हूँ, जो मैंने भी बात कही, कि एक बड़ा गैप, एक बड़ा तकलीफ़ दे गैप हमने देखा और ये भी देखा कि उसके अंदर कोई ख़ास हैंड होल्डिंग नहीं थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बड़ी कसरत से होते थे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी को लेकर कॉन्सर्ट्स नहीं हो पाते थे। तो उन 10-12 साल हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से कोई ख़ास ख्याल या सेफ्टी नेट म्यूजिशंस के लिए क्रिएट नहीं किया गया। अब एक और बहुत मुख्तलिफ तरह की चैलेंज हमारे सामने आया विद कोविड-19। व्हाट मोर कैन बी डन टू क्रिएट दैट सेफ्टी नेट? देखिए, अब जो सेफ्टी नेट की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द सेफ्टी नेट जो पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और नहीं मिल रहा था हमें। एंड उस वक्त भी म्यूज़िक इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, क्योंकि जो सारे लाइव प्रोग्राम्स एंड कॉन्सर्ट्स वगैरह होते थे, एवरीथिंग हैड कम टू अ स्टैंड स्टिल। एंड let's accept it that basically for musicians when they sing live, that's where the real money lies, because बाकी तो और कुछ उनके पास होता नहीं है। अब जो कोविड की वजह से फिर फंस गए बेचारे, और लाइव अगर सिक्योरिटी तो अब है, करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन अब हमें जो सपोर्ट चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। देयर इज़ अ लॉट दैट कैन बी डन, देयर हैज़ टू बी अ विल फॉर इट, and also it has to be on the priority list, which unfortunately it has never been.
culture and mass is not very much on the priority list of our governments, not just this government, but even our past governments. And this is an important part of our culture. And I strongly feel that it shouldn't be interlinked with religion at all. It should be treated as a cultural thing, which is very important, and it should be given that kind of impetus, which it's not getting. अच्छा, we live in a day and time which is very interesting. इस वक्त अगर आप बात करते हैं ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स की, तो हम कहते हैं ये चावल, गंदम, प्याज, आटा उसी तरह एक्सप्लोर होगा, लेकिन साथ साथ नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स वेयर देयर इज़ अ क्लियर इकोनॉमिक एडवांटेज। उमर, पूरी दुनिया में जैसे अगर आप तुर्की की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, दे हैव मेड देयर मार्क। अब इनकी जो ये कल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं जिसमें म्यूज़िक शामिल है, जिसमें खाना पीना शामिल है, आप तुर्की की बात करें, उनका कंटेंट इस वक्त $256 बिलियन की मार्केट इंटरनेशनली क्रिएट कर चुका है। Is the government, because now you're a part of it as well, exploring these venues कि हम किस तरह पाकिस्तानी म्यूज़िक, पाकिस्तानी फूड, इसको एक स्टैंड अलोन एक मकाम दिला सकें ग्लोबली? You know, the opportunities for us to project our culture, our exports, like our cultural exports, like you're saying, those opportunities lie within expos. इटली में जो एक्सपो हुआ था, आई थिंक 5 साल पहले, अभी दुबई एक्सपो 2020 आने वाला है, in which these are prime opportunities where we get to present our best foot forward. Yes. Sadly, we are not doing that. If you look at because I was involved as an architect also looking at, there was a team that was put together to look at the design of the Expo 20 Pakistan ka pavilion at the Expo 2020 Dubai. The way that has been handled, sadly, in terms of giving the funding for it, in terms of the design, how the brief was given, when the timelines were given to the designers, we don't take it seriously. We're still stuck in jo aap keh rahe hain, gandum and the fruits and all, which is fine. I don't think we've paid enough attention, or we've had enough focus to get to the cultural aspect of the fun stuff of it. And there is so much that we can possibly do. I mean, thinking about it कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया है, अब आपके पास हो सकता है एक्सपोज ना हो सकता है ट्रैवल एंड टूरिज्म जिस तरह पहले होती थी नहीं, बट जब हम कहते थे ना शनाज आपा, दिस इज़ परफेक्टली द टाइम व्हेन म्यूजिक विल हैव नो बॉर्डर्स. इफ़ यू हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इफ़ यू हैव अ गैजेट, आप दुनिया भर की चीज़ें सुन सकते हैं. नाउ इट्स अबाउट ग्रैबिंग द आई बॉल्स एंड मेकिंग योर सेल्फ विजिबल. क्या मशवरा होगा आपको, हुकूमत क्या कर सकती है टू मेक आर content creators, our musicians, our craftsmen more prominent? लेकिन दुनिया भर में ये होता है, एंड इट्स नॉट रॉकेट साइंस. नॉर्वे, आप सोचे इतनी छोटी सी जगह है नॉर्वे जैसा मुल्क, उनके पास इतना बड़ा बजट होता है टू डू एग्जैक्टली दिस एंड टू एक्सपोर्ट देयर ओन म्यूजिक to other countries. UK does it, Australia does it. I mean, I don't know why this should come as a shock to our governments that there are ways in which we can project a positive side of Pakistan abroad through music, through culture. It's very easy to do. और अब जैसे you're saying, I think the way to go is online streaming, with live streaming करके. अब क्योंकि concerts तो होने से रहे, for at least not in the near future, you can't see live performances taking place. एक तरह से बहाने सारे चले गए ना. पहले जो कहते थे वीज़ा नहीं मिल रहा, फ्लाइट नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे, बहाने खत्म हो गए, अब काम करने का वक्त आ गया. लेकिन यहाँ पे I think once again kudos to Shaan-e-Pakistan for creating a platform that went international even for the last 5 years. UK में, इंडिया में शान-ए-पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के सामने आया जिसने पाकिस्तानी म्यूजिशियंस को इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया. सो वी हैव सच ब्रिलियंट टैलेंट जिसके पास शायद वो स्ट्रक्चर, वो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से इतनी ऑर्गेनाइज तरीके में ना भी हो, फिर भी उन्होंने ग्लोबली, इंटरनेशनली अपना नाम मनवाया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है. आप दोनों से जानना चाहूँगी, शान-ए-पाकिस्तान, आई थिंक मेरे लिए पर्सनली सिर्फ मैं ये कहती हूँ तो मुझे एक फ़ख्र महसूस होता है, दिल में एक खुशी, एक वार्मथ का एहसास होता है. आप लोगों के लिए शान-ए-पाकिस्तान एंड यू नो व्हाट दे हैव क्रिएटेड थ्रू सेपमा, इसकी क्या अहमियत है उमर? I think it's what they've done. I got to know about it a couple of years ago, when we were approached by Shaan-e-Pakistan.
We loved the idea then, we love the idea now, and I just wish that there were more people or more organizations that were thinking along these lines, because it really sets up those platforms for struggling artists, for struggling entrepreneurs who otherwise would not be, you know, have no direction or no foundation. More than that, मुझे ऐसा लगता है it pushes you. What I love about it is it pushes you to be idealistic. It pushes you to be optimistic. Because शहनाज आपा, शानदार एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम अपने आप से कम एसोसिएट करते हैं. हम समझते हैं हम इतने शानदार नहीं हैं. आप क्या कहेंगे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं. आई थिंक हैट्स ऑफ टू हुमा दैट शी हैज़ एक्चुअली कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट, एंड नॉट ओनली कम अप विद इट बट डेडिकेटेडली शी हैज़ बीन एट इट थ्रू थिक एंड थिन. When I was with a television network, we were partners at that time, and you know, she had taken it to India and then to Lahore, and after that I've been with her as part of a PR company when she was going to take it to Sri Lanka. And at that time also, and आप सोचें कि ये मार्च में जाना था श्रीलंका, एंड मार्च में जब ये कोविड का हुआ तब तक जब सब कोई लॉकडाउन के अंदर आ रहा था, शी वाज डिटर्मिन्ड कि नहीं है, मैं करके रहूँगी. और वो बिल्कुल आई थिंक 2-3 दिन का फ़र्क था, टिकट्स विकेट सब कुछ सब के हो चुके थे. एंड यू नो, सो it was that commitment, that passion to not only something that she believed in, but it was for the cause of Pakistan. It was something that she wants to project to the world. So and every time there's like a hindrance, you see it as a creativity challenge. And it requires disruption. So don't be disrupted, be the disruption. बिल्कुल. And my favorite touch from all of this, जो मैंने पहले भी बात की और आपने शायद उसको ऑनलाइन डिजिटली कहीं पे देखा होगा, कि 2019 के सेपमा में there is a category created as नुसरत फ़तेह अली खान Award. And true to the name, the maestro that he is, this is a lifetime achievement award of sorts. Someone who's dedicated their entire lives to the cause of music, to the passion of music. और 2019 में शहनाज आपा, this was awarded to टीना सानी. तो ये automatically पहले नुसरत फ़तेह अली खान का नाम, फिर टीना साहबा का इससे association. इस साल किसको मिलेगा आपके ख्याल में? ये तो बहुत मुश्किल है बता, और आई थिंक हाँ बिल्कुल, एंड सिंस जूरी का भी हिस्सा है तो बिल्कुल भी नहीं कुछ बोल सकते. ओहो, लिप्सा सील, ये तो मैंने संकट में डाल दिया आपको. उमर, आप क्या समझते हैं शान-ए-पाकिस्तान 2020 कौन होगा? No idea. My ears and my eyes are open. I'm also looking to see who the winner would be this time. लेकिन आपको बताते चलें 16 कैटेगरीज हैं जी, 16 लोगों को ये अवार्ड मिलेगा, and we are keenly looking forward to that. Not only because it's an award ceremony and we are a part of it, लेकिन हमें genuinely लगता है कि आजकल के माहौल में जब इतनी बेयकीनी है, अगला स्टेप आपको नहीं पता, we need that breath of fresh air. So once again, शहनाज आपा, in these very difficult times, आप किस किस्म का मौसीकी सुनती रही हैं that has given you hope? You know, I am basically a very retro person. So for me, the music that I thoroughly enjoy, regardless of whether it's Pakistani or whether it's English, it's from the 60s and 70s, and वो वाले मैं music सुनकर और I'm transported in another era. So I thoroughly enjoy that. And an era where definitely there is support. So last question to you would be, Umar, government support. आपको लगता है कि safety net जो हमारी उम्मीदें हैं इस नए पाकिस्तान से, कि यहाँ पे हर शख्स और ख़ास तौर पे जो creative, हसास craftsmen हैं, उनके लिए भी safety net होगा? Are we on that track? Recognizing the problem was the first step, and we have recognized it. You do know that the Prime Minister has pushed tourism, all sorts of tourism, not just religious tourism, and you can see from the exactly from the newly built facility that we're serious about it. We are recognizing this as something which has tremendous potential. So the first step is there, the foundations are there. We're in obviously the second year of the term, 3 more years to go. So I'm sure, yes, once that we've recognized the problem, and yes, we're going to be backing it up.
आई थिंक दैट इज़ अ ब्रिलियंट आइडियलिस्टिक नोट टू बी ऑन। और हर चीज़ मेरे ख्याल में उम्मीद पे कायम है इस वक्त दुनिया में, जहाँ किसी के पास परफेक्ट आंसर्स नहीं हैं, बल्कि शायद हम सवाल को भी सही तरह समझ नहीं पाए। लेट अस बी सेव्ड बाय द म्यूज़िक। सो बहुत बहुत शुक्रिया शनाज आपा एंड उमर फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ जी दिस इज़ इट फ्रॉम अस। लेकिन ऑफ कोर्स द बिग क्वेश्चन इन एवरीवन्स माइंड, शान-ए-पाकिस्तान 2020 कौन होगा? ये जानने के लिए आप इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे देखते रहिए, बिकॉज यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। हम तुम ता दा ना ना ता ना 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 रे, हम तुम ता दा ता ना 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 ता ना ना रे, गा ला ली गा ली गा ला ला गा ली गा ला ला गा